Hello and welcome to Jist. In the winter of 2009, the month December, the sun in Delhi was bleak, and so were the fortunes of the BJP after two losses in the Lok Sabha. It is then the RSS, it seems, stepped in to take charge of the party. It ignored the Delhi's hefty BJP leaders and brought in a Mumbaikar hailing from Nagpur to head the party. It is at that time that Nitin Gadkari, the BJP president, had told me that he had two basic dreads after arriving in Delhi. One was the fickle Delhi winter, and the second was a treacherous Delhi politics. You were called that everybody in Delhi said that you are RSS man now in Delhi. देखिए मैं आरएसएस का हूँ इज इम्पॉर्टेंट फॉर द आरएसएस फॉर इन द पॉलिटिक्स रोज वर्चुअल डिशुम हो रहा है विपक्ष और पक्ष के बीच में. Why can't everybody do politics like you? मुझे जो कुछ राजनीति में मिला है मैं देश के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ. मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ. What about India? नहीं, इंडियाज फ्यूचर इज ब्राइट. जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो एक हो गए. इसका कारण हम है. 24. You think you have a chance to be back? One of the opposition neta was saying that I like Nitin Gadkari, but he sometimes sounds like sapnon ka saudagar. He's selling dreams. मैंने ऑपरेशन के पहले एडमिट होने के पहले मेरा एक फेवरेट पकोड़ा का दुकान था. पकोड़े खाए मस्त पेट भर. अभी हवा चली है कि नितिन गडकरी जी पे फिल्म बन रही है. मैं जो टर्नओवर कर रहा हूँ 2,500 करोड़ का है. मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करता हूँ. मैं बालों से अमीनो एसिड बनाता हूँ. डॉक्टर नहीं लगाते आप अपने नाम का? केवल चूना लगाने के लायक था. शुरू करें. Welcome to Jist, Mr. Thank you. Nitin Gadkari. Thank you. Good to see you, as always. Gadkari sahab, I remember in 2010 January or something, there was one complaint that you had made कि मेरे को एक दिल्ली का विंटर वेदर और दिल्ली की पॉलिटिक्स रास नहीं आती. रास आई थी? आप बिल्कुल आइए. बट आई हैव सीन वन थिंग. मैं अभी यही बोल रहा था. अच्छा, आपको मैं पूछता हूँ कि दिल्ली मेरे लिए उस समय नहीं थी और 10 साल में अब दिल्ली में मैं मंत्री करके भी काम कर रहा हूँ. उसमें बीजेपी के अध्यक्ष करके भी काम किया. क्या आपको लगता नहीं मैं दिल्ली में अब एडजस्ट हुआ और मैं कुछ अच्छा एडजस्ट हुए? लेकिन दिल्ली में आकर के लोग पॉलिटिकली एडजस्ट ज्यादा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली एडजस्ट कम होते हैं. बहुत कम ऐसे लोग हैं who have left a mark for creating something big. You see, you came with Prime Minister Narendra Modi, who has talked of a different language of development. I think the most remarkable thing about you, what I like, is your garage. मैंने यहाँ नेताओं के यहाँ रेंज रोवर, जी क्लास मर्सिडीज, जी वैगन ये सब देखा है. लेकिन टू कन्वर्ट योर गराज इनटू अ स्पेस फॉर योर पैशन. सो नाउ लेट्स फर्स्ट चेक योर व्हीकल्स. आई थिंक द पब्लिक वुड लव टू सी दिस. सो व्हाट अबाउट दिस वन? This is the Toyota Innova car. It is 100% on bioethanol. Ethanol rate is 60 rupees per liter. Petrol rate is 120 rupees per liter. This car generates 60% of power from the engine and 40% ethanol. Even we can use 100% petrol in this car. This is no pollution. And that is why you call it? It's a green fuel. No That is why you call it pollution. flexi fuel. Flex fuel. And you just compare with the petrol rate. By considering as a petrol rate, it comes to 25 rupees per liter petrol. So 2 rupees per kilometer, 1 rupees 50 paisa or 2 rupees. I have made some notes that ethanol, if you convert 20% add to the fuels, the consumption by 2025 will be 1,016 crore liters, whereas the supply can be 1,500 crore liters. There are two things. This car is on 100% ethanol. You are talking about the car where we are adding petrol, and in petrol we are adding 20% ethanol. That is this case we are giving the reference of that. But this is there is no need petrol. It is 100% So it totally go in. 100% bioethanol. And what about the cost? Ethanol is from the farmer. The farmer who are making broken rice, corn, sugar, Parali? sugarcane juice, parali, biomass, and it is the Kisan is Annadata. Now I am happy that Kisan is turned into Urja Data, and now the Kisan is we want to turn as a bitumen data, is making bitumen. And third is within a year now Kisan will be Hawaii Indan Data, that aviation fuel also. You mean to say that the ethanol which you are putting in this can actually go into the engines of the aircrafts? 100%. It is to be in the process that in Panipat, the Indian Oil is doing the project by which from Parali, rice straw, which is creating pollution problem in the Delhi, that Parali,
Now they are making 1 lakh liter of ethanol per day, 150 ton of biobitumin, and now they are making bio aviation fuel. And in the petroleum aviation fuel, now it is to be law is coming to our country also, to the whole world, that 10% of bio aviation fuel we have to add into the aviation fuel. Let's go see the next car. The next one is your? This is the hydrogen car. I am telling you once, just a minute. Yeah. This is the first car in the world. First ever? First car in the world which is of Euro 6 standard. Okay. BS6 emission norms. First car in ethanol, because already cars are available in the world with the BS4. Are there vehicles which can be called flexi fuel in the world? Because they are running on ethanol and generating electricity, and the both fuel are there. And even you can use this car on 100% petrol. But are there petrol, ethanol, electric vehicles? Any other? Three of them? Need to add petrol. No, I'm just asking that are there similar cars? Actually, in place of ethanol, you can add 100% petrol in it. There is no So you mean to say there is complete switching which can be done between ethanol and but petrol why in this we vehicle? should use petrol? Because petrol is imported. The cost How is much are we high. spending on our cost of importing crude every year? 16 lakh crore per year we are making export of fossil fuel in creating pollution in the country. So it is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous, and the income benefit is going to the farmer, to the rural agriculture and tribal India. How soon can we have more vehicles of this kind then? Now, yesterday I have got a chance to meet with Finance Minister. I request him that GST, this is like electric car. Electric car 60% and ethanol. It is no pollution, and it reduces the imports of our country. So I make the request for making 12% GST on this. Okay. So she will consider, and 100% then there will market open. So you mean to say that 28% may go actually? Actually, it is up to her to take Finance the decision, but I request. And the GST Council. And the second important thing is, now we have two-wheeler, Hero, TVS and Bajaj on flex engine, ethanol. Okay. 100% ethanol, auto rickshaw, car, and even buses. And even we can encourage people to make this. But how truck extensive also on is the usage? A petrol engine. We can make a petrol engine for the truck, and we can use the same principle there, and we can make it on electricity and ethanol. It will reduce the logistic cost. This one? This is the hydrogen car. What is the name? I have not seen this The name vehicle. of the car is Mirai. The What does Mirai Mirai mean? is a Japanese word, and this both car is from Toyota. The Mirai means Bhavishya, future. In the futuristic technology, futuristic vision, it is to be a future of the world. And Because this runs on? On hydrogen. Let's check it right. Okay. So let's start. Yes. Chaliye. So, is it moving? Is the engines running, or it's being pushed by somebody? No pollution, no sound, no water, nothing is there, and you can just enjoy the comforts. There is no vibration in the vehicle at all. Not at all. Such a pleasure. But how And do you such a get this hydrogen? In Faridabad, there is Indian Oil Research Institute. Uh-huh. They are making hydrogen from petroleum, and every time my car is going to their depot, and we are taking hydrogen from them. And how much does it, when everybody thinks of mileage? It is to So be in a tank of, say, actually 50 liters? No, it is to be 500 kilometer we can run. That's the That's the stretch limit. it can That's run. limit. Actually, you understand there are 4 type of hydrogen. The hydrogen from petroleum is to be brown hydrogen. Mhm. Hydrogen from the coal, it is to be black hydrogen. And hydrogen from sewage water, and hydrogen from biomass, waste biomass or agricultural biomass. This is to be a green hydrogen. Now the most important problem in hydrogen is the hydrogen cost is coming now $3 per kg. Now my mission and aim is to have a cost of $1 per kg. So the reason is in the electrolyzer system, we are the #1 manufacturer in the world of electrolyzer. And The one which is needed for manufacturing hydrogen. from the electrolyzer in water, that they make the hydrogen. Okay. The problem is that for 1 kg of hydrogen, we need 50 units of electricity. That is So you consider as a solar power is 3 rupees, it 150 rupees we have to give for electricity. But without electricity, from biomass,
we can make methane. And there are some process, even the Chemical Institute, Technology Institute in Mumbai, Dr. Yadav also invented, and he promised me that we will give the hydrogen less than $1 per kg. Then that will be the miracle. How does universalization of technology happen? This is one vehicle, one experimental basis. When can it reach the public? No, frankly speaking, this is now technology available in Japan and USA. People are purchasing the car. But India, it will take time. How much time are you looking Because there are two problems. We don't have filling stations. Okay. And we don't have hydrogen. Now the Tata and Leyland has already have their trucks on IC engine where we can use hydrogen. We can use hydrogen in railway engine also. We can use hydrogen in aviation. Now the problem is that filling of hydrogen, may finalize the standards of hydrogen. That is to be a process. We are working on that. We have just decided to a meeting with the principal scientific advisor of the Prime Minister with 6 ministries which are concerned with the subject, and we will formulate the policy for making filling station and how to make hydrogen. And now there is a green hydrogen mission from the government, Which was started, and yeah. 3,000 crore already budget is sanctioned. So I feel that in due course of time, within a 6 month or a year, you will get the answer of your every question, and we will be in position to start this. Now, I have one query. India today has something close to 326 million vehicles. Now, you are switching technologies, say electricity, even if 1/4 of them go electric. Today, the total production is something close, generation is close to 105 billion units. You have 111 billion units of roughly, there is almost a balance today. Now, if so many millions of vehicles come onto the road electric, how are you going to step up the electric generation? This is not the situation. Okay. Sky is the limit. How? Our present import of the fossil fuel is 16 lakh crore, and within 3 years, it will go up to 25 lakh crore. So I am talking about all alternative of biofuel and alternative fuel. You can go for electricity, you can go for hydrogen, you can go for ethanol, methanol. You're saying that the money which we are biodiesel, spending on fuels, if we invest in electricity and other things. No, you need to think on the line that area-wise, region-wise benefit is there. Now in Assam Petroleum, they have a capacity of 600 ton of methanol per day. And we have just started pilot project in Bangalore, successfully implemented, adding 15% methanol in diesel. The rate of methanol is 25 rupees and diesel is 110 rupees. It's successfully. Then Ashok Leyland is manufacturing their trucks on 100% methanol. It's from the coal. In Mumbai, the RCF fertilizer and the Deepak fertilizer, they are making methanol. So in Mumbai, we can run truck and buses on that. So somewhere we will use methanol, somewhere we will make CNG and LNG. Now in Chakan, Pune, the Blue Energy is company who has already started manufacturing of LNG trucks. Okay. And there is a saving as compared with diesel, 50% saving is there. We will reduce the logistic cost. Presently, the logistic cost in India is 14 to 16%. In the USA and European country, it is 12%. And China, it is 8 to 10%. I am confident at the end of 24, our logistic cost will be 9%. Because we are making good roads, express highway, green highways, and changing in the fuel, the result will be reducing in the logistic cost. I think we need to put on our seat belts because it will start complaining otherwise. So, one thing which I want to know, that last time when you pushed for electric vehicles, the manufacturers increased their cost of the vehicle. No, this is not the Is problem. that a factor? You understand? You understand. At the time when we start electric vehicle in the country, the cost of lithium-ion battery is something is 40-45% cost is the battery. And now that was $150 per kilowatt per hour. But now it comes to $115. And I am confident within a year it will come to $100. And then it will be equal to diesel and petrol vehicle. So there will be no problem. How much period are you giving? 2 years? I am expecting within a year, the cost of lithium-ion battery will come up to $100 per kilowatt per hour. Okay. And then there will be petrol, diesel vehicle and electric vehicle, the cost will be same. We will have electric truck, now everywhere electric buses are there. You go anywhere in the big city. Yes. Big cities. Now within 5 years, 75 to 80% of buses in the city will be electric. Okay. So there can be a time when the cost of electric, petrol and diesel vehicle may be same. Will you incentivize buying electric?
So that already in the scheme, heavy industries is giving special incentives for purchasing electric vehicle. Okay. But I feel that in due course of time we don't need that scheme because it practically on the market load is economically viable. I'm giving the example. Suppose if you have a petrol car, your expenditure is 30 to 40,000 rupees per month. Now if you electric car, your expenditure will be less than 3,000 rupees. So 27,000 will be the saving. And when the cost will be the same, you can understand no pollution and cost will be less. People are going to purchase. Now the problem is that when I was talking about electric vehicle, the people like you asking me if there is no charging, how it going to happen, it will be a problem. Now there is a waiting list for electric car. And for electric two-wheeler, there are 400 startup who are 400 making startups in the electric scooter. They are doing electric scooters, and everyone is happy doing good business. How much might be the sales of today of electric scooters? So everyone is selling. Now in Bajaj, TVS and Hero scooter, they have a capacity of 125 kilometer lithium-ion battery. The people who are making startup, they are making only for 60 kilometer storage. So they are saving the cost. So they are purchasing two-wheeler with the 60,000 and 70,000. Okay. And now in a research study, it is to be finding that every person is running electric scooter 24 to 26 kilometer per day and car is 60 kilometer. So there is no problem. And after coming night to his One house, of the opposition neta was saying that I like Nitin Gadkari, but he sometimes sounds like Sapno ka Saudagar. He's selling dreams. I never sell any dream. I am asking you question and to the whole country. Let us tell Did me. you dream of it, Mr. Gadkari, long time back that you will do something like this? Because I remember when you came to Delhi, you were talking about biofuels, Yes. you were talking about better roads. You came with a reputation. I remember that now, not many people recall. Vaguely, I remember that you were called by Mr. Atal Bihari Vajpayee as head of a task force of one of the best Gram Sadak Yojana. It is really a great thing in my life that Vajpayee ji gave me opportunity to make this historical state of art big scheme, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I think one of the most successful And ones. that is successful. Out of 6,50,000 villages, we have now connectivity to 4 lakh villages. That is to be a great contribution of Vajpayee ji. And I am happy and pride that I got effort to make that scheme. मेरे को उतरने से पहले गाड़ी से पहले before we sit down and do the interview, ये आपकी मेमोरी में सारा ये इतना लाख करोड़, इतना 1000 करोड़, इतना एथेनॉल, इतना फैक्ट्री, टाटा, बिरला, ये बादाम खाते हैं क्या रोज बहुत सारा? नहीं, मेरी ओनरशिप है इस सब्जेक्ट के साथ. देखो, there are two. ये बादाम का कमाल होगा सर. How can I will tell you. The last man I remembered was Pranab Mukherjee. He was amazing with data and details. I will tell you two things. There are two types of politics: politics of convenience and politics of conviction. I belong to politics of conviction. The other important thing is, I always feel that politics is an instrument of socio-economic reform. One of your earliest lines in your first speech, you had said it. I want to do something for society and for the people and for the country. And I am working like a mission. I have ownership remember your of this first subject. speech in the BJP office in which you had mentioned this, and I remember also that your wallet got stolen. You remember that? Yes. Those were days. Let's continue ourselves inside. Thank you. Thank you, sir. शुरू करें? आप द्वारका एक्सप्रेस में देखा आपने? हाँ, अंदर से देखा? टनल गए थे? मैं बताऊं आपका, मेरा खुशी कब हुआ, अभी यूपी इलेक्शन में जब मैं वो गोरखपुर वाला एक्सप्रेस पे गया ना, बहुत सुंदर. पहली बार, यानी बॉस, दैट हाईवे वाज अ नाइटमेयर. रोलिंग? ओके, वी गुड? सो नितिन बाबू, आई रिमेंबर you came to Delhi, and as I said, that you dreaded Delhi winter and Delhi politics. You're saying that you have adjusted. Magar, you know, there are as I said, very few politicians who eventually come to Delhi from outside and get remembered for what they did, not what kind of politics they played. Now, I also remember those days when रात को हम बहुत आपके साथ बैठा करते थे, और there used to be a constant stream of people, और पूरा टाइम खाना बनता रहता था, और वो खाना बनता रहता था, हम लोग खाते थे. अभी भी वैसे ही शुरू है. वो खाना हम लोग खाने बैठते थे, तो आप कहते थे मैंने खा लिया, उसके बाद कहते थे थोड़ा दही ले आओ,
फिर थोड़ा चावल मंगाते थे, उसके बाद आप थोड़ा सब्जी मंगाते थे, फिर एक मील हो जाता था, फिर नेक्स्ट जो आता था उसके साथ मील हो जाता था. Then I remember that day when you went in for a surgery. And will you like to recount that day, one day before the surgery, what did you do at that eatery in Nagpur? यस, पकौड़ा खाने गए थे. कौन कौन थे? ये 2-3 दोस्त मिलके गए थे. पर एक्चुअली आप एक बात देखो, मैं 135 किलो मेरा वजन था उसमें. नो आई एम 90. मैंने 45 kg कम किया है. मेरी खाने की नीयत कम नहीं हुई है, पर मेरा खाना कम हुआ है. I remember at one time we used to come back home, decide the menu for the next morning, evening and afternoon. आजकल ऐसा हुआ है, कोविड के समय मैं रेसिपी सीखा हूँ. अभी मैं रोज मेरा एक मेनू चार्ट बना है. अभी 12 बजे मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम पहला वो पूछता है, सर क्या नाश्ते में कल क्या चाहिए. तो पूरे अभी 48 आइटम्स रहते हैं. फिर मैं उसको बोलता हूँ ये करो वो करो, रोज़ अलग अलग करता हूँ. अभी मैं यूट्यूब से टमाटर की चटनी आज सिखाया उसको मैंने. तो मैं अपना खाने पीने का रात को जनरली मैं रोज़ कभी मैक्सिकन कभी चाइनीज़, मैं वेजिटेरियन हूँ पर अलग अलग प्रकार का फूड एंजॉय करता हूँ. I also remember a time when you were president of the party कि पार्टी ऑफिस में या जहाँ भी आप होते थे वहाँ एक आदमी घर से स्पेशली भेजा जाता था कि वो वॉच रखेगा कि नितिन गडकरी तक मिठाई ना पहुँचे. ये वॉच तो रहता था पर मैं खा लेता था. अभी मैं रोज 1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ. वो शौक कम हुआ कि बीच में थोड़ा मिठाई मार लिया? अब कम खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ. मैंने काफ़ी अपने को कंट्रोल किया है. देखो आपको जो लोग मुझे देखते हैं वो मुझे बोलते हैं आप 10 साल 15 साल यंग लगते हो. मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ और खाने के ऊपर मैंने काफ़ी कंट्रोल किया. You see, when you came here until today, if I look at your politics, you know, there has been a, what do you call it, Mumbaiya Bindas character to it. Now, this Mumbaiya Bindas, was it something, a trait which you started with as a young Sir, were you like this? basically there are two type of politics. I'm a conviction-oriented politics. I never print my biodata, never go to anybody to give me something. Actually, when it was decided to elect me as a president of the Bharatiya Janata Party, I go to authority that why you are making... How did it happen? Who called you? Actually, Advani ji called me. And at that time, for the future generation for BJP, they need to select the person for presidentship. The 4 name was there. D4. No. The 4 name which in the list at Narendra Modi ji, Shivraj Singh Chauhan, Manohar Parrikar and me. But at the same time, Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat. Shivraj ji was the Chief Minister of Madhya Pradesh. And in the state, their role was very important. So at that time, the Advani ji and RSS people, Advani select my name and RSS people then agreed and they tell me that you have to accept the responsibility. I go to them that why you should, I'm not familiar to Delhi and Delhi politics. You were called that, everybody in Delhi said that you are RSS man now in Delhi. No, RSS is a part of my conviction, but I'm not a man of RSS. That is to be a wrong interpretation. No, like, I'm a committed for RSS. With a man with a RSS backing. There is a backing from RSS because the nationalist thinking is important for the RSS in the politics. And the way in which for the ideology, they are supporting the people. I'm also one of that small person where RSS also support me. But this is not the correct interpretation that I am from RSS. No, some people who interpret does that ideological umbilical which you have with RSS eventually create problems for somebody like you who is being seen as a slightly more liberal? Sir, in my whole political life, I always consider that there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. In my political life, I am happy, I am conviction oriented and God gave me a lot of opportunity. I am satisfied. I am working for the party, working for the nation and working for the ideology. I don't have any objection for anybody. I remember a flight once you were campaigning in Silchar and we flew down to Bombay and there was a lot of turbulence. And are you still afraid of flights or it has improved? No, I am not afraid of flight, but I have a lot of... One thing is in my life that I am a risk taker. Okay. That is every time... I remember that you did not drop your headphones and listen music for 1.5 hours till the turbulence was there. Yes, I was happy. So is music still part of your life? Yes. Every day, every night I am listening.
Presently, I'm enjoying that song of Mukesh and Lata Mangeshkar from Sangam. Oh Mere Sanam, Oh Mere Sanam. Asad Jaipuri. Yes, I recently. Because I have all heard old you songs. humming a lot. I like songs. I like Indian music. Sometimes I enjoying Bhojpuri Sangeet, then enjoying Tamil Sangeet, something Karnataka Sangeet. I like it. So are you a closet singer, drawing room singer, or a bathroom singer? I'm a bathroom singer. Do you sing loudly or? No, I received award at the time, preliminary level, but I'm not a. I've heard that you played cricket. Yes. Did you continue it long time back? Because most of the Marathi players of your age, those who played cricket, they had 2-3 favorites. And the biggest was Salim Durrani. I like Salim Durrani because at that time in my student age, in Nagpur we have the cricket match, the Central Zone, Tulip Trophy. And the Rajasthan team captain was Hanuman Singh and Lakshman Singh, both are brothers. And Salim Durrani was also playing from Rajasthan at that time. And there was a match between Vidarbha and Rajasthan. Vidarbha was a very good team at that time. So at that time I remember the Salim Durrani is a person from the ground. We have taken ticket with 25 paisa, the ground ticket. हर चिल्लाते थे सिक्सर सिक्सर और जिससे आवाज आता था वहाँ सिक्सर मारता था. जिस जगह पे क्राउड कहती सिक्सर डिमांड करती थी उधर ही मारता था. Is that how you shaped your politics also? And your working style? I'm not going to bother about anything, neither about the people, neither anybody. I'm working with my passion, with my mission. I want to work something for country, for the society. How we can make the life of the people sustainable. That is my mission. I'm working it. The making analysis of all the thing is your duty. You are the best people who can judge it. I am not going to bother if people say good to me. I am happy. If say bad, I am happy. I don't have objection for anybody. See, today you are at the national level. You meet people from the globe, new technology, new initiatives. Did you paste posters on the wall as a BJP Karyakarta? Yes. Actually, my handwriting was very bad. So, by using cycle or then MSAB, we take that shidi and taking that chikki on the poster, and I was standing going there. And the other my use was that in the black wall, I used to take that white paint to make that black wall convert into white wall. And the person who have a good जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग है वो लिखता था. आप सिर्फ पुताई करते थे. पोता ही कर उसी के लायक था मैं. Okay. केवल चूना लगाने का लायक था. यानी आप ये बोल रहे हैं ये वायरल हो जाएगा कि चूना लगा रहे हैं. अरे वो चूना ने दीवार पर चूना लगाने के लिए मैं उपयुक्त था. अच्छा. वो ब्लैक दीवार पर. So how did you move अरे from? दूसरी बात, मैं कभी दिल्ली आया नहीं, मैंने किसी को हार पहना नहीं, अपना कटआउट लगाया नहीं, दूसरा का लगाया नहीं, कोई पीआर नहीं. जो मन में आया वो बोलता था, जैसा चाहे वैसा रहता था. और मुझे कुछ न मांगते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जिस चेयर पर बैठे वहाँ बैठने का सौभाग्य मिला. इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया. How did you move from that place? How did your change happen from a person painting walls, पुताई करना, पोस्टर लगाना? वो धुन थी, वो कन्विक्शन था, पॉलिटिकल सक्सेस नहीं था और उपहास, अपमान, रिकग्निशन नहीं था. काम करते थे. आज के दिन तो बहुत अलग है. तो वो कन्विक्शन के लिए काम करते थे. Ask anyone in the opposition and one of the यानी बीजेपी किसी नेता का नाम निकलिए तो तलवार निकल आती है. अगर नितिन गडकरी का नाम लेते हैं तो तारीफ निकल आती है. You see, this is slightly in आज के polarized atmosphere में it's difficult to see. What did you do? देखिए, मैं आरएसएस का हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे भी इसका आश्चर्य लगा कि पार्लियामेंट में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ मेरे डिपार्टमेंट पे 75 लोगों ने भाषण दिए. ओवैसी से लेकर सभी पार्टी के लोग थे और हर आदमी ने मेरी तारीफ की और मुझे धन्यवाद दिए. तो मैं नहीं था उस समय, मैं बाहर था, तो मुझे स्पीकर साहब का फ़ोन है, बिरला साहब का. उन्होंने कहा कि आपके ऊपर लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप यहाँ नहीं हैं. तो मैंने कहा वो वीके सिंह जवाब देंगे. बोले ऐसा मत करिए, आप आइए यहाँ. फिर मैं तुरंत नागपुर से आया कार्यक्रम कैंसिल करके और मुझे बहुत खुशी हुई. ना मैंने मेरी आइडियोलॉजी छिपाई, ना मेरी पार्टी छिपाई. एक बात जरूर है, मुझे बीजेपी में भी ये सिखा गया कि कानूनी काम किसका भी हो सबका करो, गैर कानूनी काम अपने का भी मत करो. जब लोग मेरे पास आते, जो होने लायक होता मैं करता हूँ. मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करता. बट इफ आई सी द पॉलिटिक्स टुडे, पार्लियामेंट नहीं चल पाती है, रोज वर्चुअल ढिशुम ढिशुम हो रहा है विपक्ष और पक्ष के बीच में. व्हाई कांट एवरीबडी डू पॉलिटिक्स लाइक यू? ये तो मुझसे बजाय बाकी लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर. पर एक बात मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी,
उन्होंने कहा था मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं हो सकते। अभी हो गए हैं। नहीं, ये पॉलिटिक्स में पिछले अनेक दिनों से थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जो वैचारिक आधार पर पॉलिटिक्स होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा खट्टाई आई है। हम सबको मिलकर राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करके इसको बदलना You होगा। need to only tell the opposition to improve, or do you, the party also needs to improve? देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी सब लोग विचार करें और जो जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करके आगे जाए। अभी हवा चली है कि नितिन गडकरी जी पे फिल्म बन रही है और उसमें कुछ लोग जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इट इज बीइंग सीन एज अ पॉसिबल इमेज करेक्शन ऑफ नितिन गडकरी एंड टाइमिंग है 2024 का इलेक्शन आने वाला है। सर, मैं कोई टाइमिंग नहीं, मेरा कोई पीआर नहीं और मुझे कोई लेना देना नहीं। आप कभी एक भी पत्रकार ऐसा होगा कि मैंने आज तक उसको फोन किया कि तुमने यूं क्यों छापा, ये क्यों नहीं छापा और ये छापो। देखिए, जिसने फिल्म निकाली उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने नए टैलेंटेड लड़के थे, वो निकालना चाहते थे। मुझे एक बार, मैंने उनको 2 बार 3 बार नहीं बोल दिया। चौथी बार मेरे दोस्त के साथ आकर उन्होंने कहा कि हम यंग है, जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपके नाम पर ये फिल्म निकालेंगे, आप हमको अनुमति दो। तो निकालो। मैंने अभी तक देखी नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। रिसर्च आपसे करी बात करके कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, मेरे मित्रों को मिले, मेरे परिवार में लोगों को मिले थे, मुझे भी मिले थे, पर मेरा इस फिल्म से कोई संबंध नहीं। उन्होंने इंडिपेंडेंट, उनका वेंचर है। और चुनाव, इतना प्लानिंग, देखो मैं आपको बताया, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। ऐसी मेरी कहानी है। न मेरा पीआर है, न मेरा कोई सोचना है, न मेरा कोई एम्बिशन है। मुझे जो कुछ राजनीति में मिला है, मैं देश के लिए, गरीब के लिए, समाज के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। पहले घर में भी जाता हूँ, परिवार में भी रहता हूँ और बाकी समय समाज की सेवा करता हूँ। दूसरी बात, राहुल, आपको पता नहीं होगा, मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव काम, सोशल वर्क करता हूँ। मैं नक्सलाइट बेल्ट में, आदिवासी क्षेत्र में 1800 स्कूल चलाता हूँ। मैं अभी मेरे एनजीओ 40,000 लोगों के मैंने हार्ट की सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज कर दी। कैंसर, अभी मैं एक बड़ा सेंटर खोल रहा हूँ। एमआरआई जो है जिसको 15,000 रुपये लगते हैं वो 800 रुपये में, सीटी स्कैन 600 रुपये में, ये डायलिसिस 300 रुपये में। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज द मनी? मैं CSR में से, अभी क्या, मैं जब मंत्री था तो मैंने MSME मंत्री होने का विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क खुला। अब उसका टर्नओवर 40,000 करोड़ है। वो लोग आए कि हमको कुछ करना है आपके लिए, मतलब मुझे मत करो। तो 1 करोड़ ने मुझे 3 वैन दी। एक वैन दी पैर लगाने की, जो गांव में जाती है और लोगों को पैर लगा देती। 2 वैन दी वो आंखें जांच करती है। मैं फिर चश्मे देता हूँ लोगों को, कान जांच करती है, कान की मशीन देता हूँ। मैंने अभी तक 4,500-5,000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन फुकट करके दिए। यानी थ्रू CSR एंड अदर। हाँ, मैं खुद भी मदद करता हूँ। आप कभी आओ मेरे, आपका प्रॉब्लम क्या है, ये दिल्ली में है, आप लोगों को ये देखा ही नहीं है कि राजनीतिक नेता सामाजिक काम करता है। तो मैं जब ये बताता था, लोग मुझे बिजनेसमैन हो करके, मुझे बड़ी नाराज़ी इस बात की। खुद करते नहीं थे और करने वाले काम को देखने की भी आदत नहीं और रिकॉग्नाइज करने की। मैं जो टर्नओवर कर रहा हूँ 2,500 करोड़ का है। मैं ऑर्गेनिक फ्यूल में काम, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ। मैं बालों से अमीनो एसिड बनाता हूँ, बायोमास से पावर बनाता हूँ, इथेनॉल बनाता हूँ, 3 शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ। मैं 22 कंटेनर सब्जियाँ फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की अमेरिका और कनाडा बेचता हूँ। और मैंने अभी प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का काम शुरू किया। मैं इतने प्रोजेक्ट करता हूँ। मुझे 7 डिलीट मिली है, 7 डिलीट्स। और मैं ये पूरा अभी वाटर, डॉक्टर नहीं लगाते आप अपने नाम जाके? नहीं लगाता हूँ। इसका एक कहानी बताऊंगा। अभी वाटर नितिन गडकरी थोड़ा सा नहीं, मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि मैं 75 में जब HSC हुआ उस समय जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे केवल 52% मार्क मिले और मेरा साइंस परसेंटेज था 49.26%। आई वॉज डिस्क्वालिफाइड 26% साइंस ग्रुप, साइंस। हाँ। तो और फ्लेक्सी फ्यूल, और आप मुझे डिस्क्वालीफाई हुआ मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। मेरे घर वाले नाराज हो गए और इसके बाद मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। अभी 2 मिनट पहले आपको IIM मुंबई ने मुझे अवार्ड दिया। IIT IIM में भाषण करता हूँ। वर्ल्ड में मैं रोज यूट्यूब पर मेरे 4.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं अंग्रेजी। तो मुझे भी ध्यान में नहीं आता, पर मैं डॉक्टर नहीं लगाता क्योंकि मेरे मन में वो बात लग गई कि मैं विद्वान नहीं हूँ। नहीं, क्या होता है कि नेता को आसपास एक इकोसिस्टम होता है, पूरा इको चेंबर होता है जिसके अंदर वाह गडकरी जी वाह करते हैं, तो थोड़ा आदमी गुब्बारा बन जाता है। Do you think that has not affected you? मेरे पास कोई गुब्बारा ही नहीं है। फ्रैंक फेयर बिंदास काम है।
जिसको हाँ बोलना है हाँ बोलता हूँ, नहीं बोलना नहीं बोलता हूँ, जो बोलना है मुंह पे बोलता हूँ, पीछे नहीं बोलता किसी के। But there was a time when you had to leave your president. You didn't contest the second term. Recently, when you were not part of the parliamentary board, didn't you feel bad about it? Does it matter to you? सर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ रहना है, जहाँ रहना है रखना है तो रखो, नहीं रखना पार्टी तय करेगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम में मस्त और खुश हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे देश ने बहुत कुछ दिया, लोगों ने दिया। ये मुझे कब ध्यान में आता है, मैं जब हवाई जहाज जाता हूँ एयरपोर्ट, इतने लोग मेरे पीछे लग जाते हैं फोटो निकालने के लिए। अब हवाई जहाज बैठता हूँ तो पायलट आ गए, फिर एयर होस्टेस आ गई, और लाइन से एक बहुत रिनाउंड पत्रकार है मनीष अवस्थी करके, आप जानते हो कि आज तक में थे, उस दिन मेरे बाजू में बैठे थे। तो बेचारों को वो खड़े हो गए और करीब 70-80 फोटो उन्हें निकाले। वो जानवर नागपुर जाने तक फोटो निकालते थे। परसों मैं एक आइसक्रीम की दुकान में गया, वो लड़कों को, मेरे नातिन को आइसक्रीम, अब मुझे भी आदत है कहीं भी घूमते रहता हूँ, फुटपाथ पे खाने का शौकीन हूँ। मैं गया तो बाहर आया तो 500-700 लोग पूरा घेर लिए मेरे को, तो सिक्योरिटी वाले नहीं मेरे को, लेकिन वो कहानी, अब आपने आइसक्रीम का बात बताया, मुझे वो नागपुर की कहानी ऑपरेशन से पहले की बतानी है, या आप बताएंगे कि आपने किया क्या था? मैंने ऑपरेशन के पहले, एडमिट होने के पहले, मेरा एक फेवरेट पकौड़ा का दुकान था। तो मुझे डर लगा कि साला कल अपना ऑपरेशन हो गया तो अपन पकौड़े खाएंगे या नहीं खाएंगे, अंतिम इच्छा होती ना वैसा। तो मैं चुपचाप रात को 11 बजे सब खत्म होने का, मुझे लगा सब शांति होगी, तो मैं चुपचाप जाके उसको 8-9 बजे बताया। मैं 2-3 दोस्त मिलके गया, जब गया तो तुरंत लोग दरवाजा खोल के बाहर आके बैठे। मैंने पकोड़े खाए। आपने शटर भी बंद किया? शटर बंद किया, आपने शटर बंद किया था? पकोड़े खाए मस्त पेट भर। कितना उस दिन खाना नहीं खाया, 5 प्लेट खाए होंगे। 5 प्लेट भजिया खाया? हाँ बिल्कुल। देखो मैं आपको एक मैं बात ध्यान में रखूँ, जो होना है होगा, जो होने वाला है होता है। जिंदगी खुशी से जियो, आनंद से जियो। आपने आनंद पिक्चर देखा था? बिल्कुल देखा। उसमें वो अमिताभ अपना राजेश खन्ना का डायलॉग था ना, जहाँ अपना वो जो जिंदगी एक रंगमंच है, जिंदगी एक रंगमंच है, तू और मैं और सब कुछ इस रंगमंच की कठपुतलियां है, जिसकी दौर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब और कैसा उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। उसी फिल्म में आनंद से रहो और चलते रहो, जब तक जिंदगी है खुशी से रहो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ। One of your inspirations came, one line came from बाला साहब ठाकरे also. बाला साहब मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। मैं बाला साहब पर प्रेम, वो बिंदास्त आदमी थे और उनके व्यक्तित्व की छाया मेरे ऊपर। Did he inspire you that you wanted to do politics of that kind? Because he's one guy which people say he was, before the interview, he was drinking wine in his bedroom, in his room. He came out with a wine glass. He says, I don't have politics which is outside, inside different. I do the same thing. He is a very frank, fair, झूठ नहीं बोलते थे, मुंह पे बोलते थे। और What did he tell you? He told you something. मेरे ऊपर प्रेम करते थे। उनने मुझे एक स्लोगन दिया था, मैं बोलता था सर ये अड़चन है, ये फाइनेंस में, ये जीएडी, कुछ क्या क्या बोले वो सब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो फिर वो एक बार बोलते थे, देखो नितिन, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, ये लेके जाओ, Get things done. डन। ये समस्या हो कि और ये इसकी बात मत करो, मैंने तुमको मंत्री बनाया, यू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम इंटरेस्टेड इन रिजल्ट्स, मैं परफॉर्मेंस ऑडिट करूंगा, मुझे वो काम करके चाहिए, बाकी बातें मुझे मत बताओ, तुम्हारी समस्या मेरे को मत गिनाओ। मैंने तुम्हारे पर इसलिए विश्वास रखा कि तेरी काबिलियत है, अगर तू कर सका तो तेरी काबिलियत सिद्ध हुई, नहीं हुआ तो तू फेल हो गया, ऐसा बोलते थे। You came from Maharashtra. You find Bala Saheb Thackeray a good man. Were you happy with the split in the Shiv Sena? Is it that things had come to such a situation? Politics is different and relationship is different. Human relationship is the biggest strength of politics, social work and business. My relationship with the Bala Saheb Thackeray and Thackeray Parivar is not a political relationship. Anywhere, now, in whole Maharashtra, the Congress, NCP, Shiv Sena, BJP, I always feel that they are my family people, family friend. I always behave like that. I never discriminate any leader on the basis of caste, creed, sex, and party and religion. I am always same with everybody. Do you think in Maharashtra things are good for BJP, or Maharashtra, that Maha Agadi is in? Sir, I am not too much related with Maharashtra now. Every time now I am from Delhi to Nagpur going directly. Okay. I don't know too You much don't about it. bother about Maharashtra. I don't Focus want to here. interfere in it. Neither I don't know anything. What about India? The coalition. The coalition. Now, India's future is bright, and the politics of development and progress is the agenda for our party under leadership of Modi ji. I am confident that we will get elected, we will get good majority. You are not giving any chances to India, the coalition, by all the opposition. ये मजबूरी की अलायंस है,
Really? यस, ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शन, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो एक हो गए, इसका कारण हम हैं। बीजेपी और एनडीए ताकतवर बने मोदी जी के नेतृत्व में, इसके कारण सब वीक लोग इकट्ठा आए। चले लड़े, वो हम लड़ेंगे उनसे। You think they have no chance? Despite Rahul Gandhi, Bharat Jodo, he's looking so visible now, you know. कर रहे हैं, अभी 10 साल हो गए जोड़ो जोड़ो, वो उनके जोड़ते रहेंगे, हम हमारी करते रहेंगे। 24. You think you have a chance to be back? Will Nitin Gadkari be contesting from Nagpur? ये तो पार्टी तय करेगी, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट भी यही बोलता है यहाँ पे, पार्टी का प्रेसिडेंट भी यही बोलता है। कैसा पार्टी है? नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप लेकिन अब राहुल गांधी कहता है कि आपका इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट का। देखो, ये पार्टी में अपना निर्णय वो व्यक्ति कभी नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा हो। अडवाणी जी और वाजपेयी जी भी चुनाव लड़ते थे तो उनका निर्णय पार्टी मिलकर करती थी, और पार्टी जो तय करेगी वो करूँगा। I was sitting with two very bright men from Harvard, Indians, young boys, and they said that they have very few people about whom they hear the kind of work done reports like they about you. One of them, a Muslim boy, very, very sharp and good in poetry, he said that I consider Nitin Gadkari Shersha Suri too in terms of building infrastructure. That will not only speed up things, that will create new towns, new industries. Now, you talk infrastructure, but चुनाव तो freebies जिताते हैं सर। यानी ये रेवड़ी ले लो, ये फ्री ले लो। Is there a crisis? राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। राजनीति अच्छी है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है, राजनीति बुरी है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। जनता किसको वोट देती है और वो व्यक्ति किस कैलिबर का है, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, ये जनता को तय करना है उस पार्टी और नेता के बारे में। और जब अच्छे नेता और अच्छी पार्टी आएंगे और लोग अच्छी बातों को सपोर्ट करेंगे तो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। और मैं ये मानता हूँ, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से राजनीति में आया हूँ, इमरजेंसी के खिलाफ। मैं जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आइकॉन मानता हूँ, और आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। तो मैं अपने विचारों के आधार पर देश के लिए काम करता हूँ, और मैंने अभी लोगों को You praised Manmohan Singh that he did a good job in bringing liberalization. Is that part of the ethos you follow? जब वो नरसिंह जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब वो कुछ लिबरल इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनीति में राष्ट्र का निर्माण है समझकर काम करना चाहिए। अब मैं रोड बना रहा हूँ, मैं देश के लिए बना रहा हूँ, लोगों के लिए बना रहा हूँ, मुझे खुशी है। अगर आज मुझे एक ने फ़ोन किया, बोले मुझे वो कारवार से गोवा आ रहे थे, उसने कहा कि मैं 3 घंटे का टाइम समझ के जा रहे थे और हम 1.25 घंटे में पहुँच गए। तो लोगों को अब अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 12 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। ऐसे इतने रोड हम बना रहे हैं कि अब इसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, लोग भी अपने खुद गाड़ियाँ खरीदी करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी और देश का विकास होगा। हमारा आपकी टीम में हमारा पुराना मित्र है कौस्तव, उसने मुझे बहुत सारा अचीवमेंट्स का डेटा जो बताया। सो यू आर ए मैन हु इज डीकंजेस्टिंग दिल्ली, 16 प्रोजेक्ट्स, 17 ग्रीन इनिशिएटिव्स इन फॉर्म फ्लाई ऐश। आपने ये एक छोटी सी बात रखो, मैं दिल्ली के विकास के लिए, पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और इस साल के दिसंबर के अंदर तक मेरे पूरे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। So 17 green initiative, fly ash use, waste plastic, rubber, steel slag, coir fiber, all this is being used. Today, your 1.4 lakh kilometer roads, there has been a 59% increase in highway construction. In terms of awards, you have achieved 37 kilometers per day? 38 in the COVID period. We have 7 world record. Yes, I can see that there are 7 world records also. Asset monetization. सर आपको राहुल बताता हूँ, आप जरूर ये बात बताओ, मैं अब हिंदुस्तान के रोड बनाने के लिए मुझे धनवान लोगों के पैसे नहीं चाहिए, मुझे फॉरेन के फंड्स नहीं चाहिए। मैं छोटे पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सरकारी नौकर, रिटायर्ड लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि अभी इन्विट मॉडल में हमने हमारे बॉन्ड्स इशू सब्सक्राइब किए थे, तो 7 दिन का टाइम था। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए। मैं 8.05 इंटरेस्ट एनुअली दे रहा हूँ, और हर महीने में अकाउंट में पैसे जमा कर रहा हूँ।
बैंक का डिपॉजिट में कितना ब्याज मिलता है आपको मालूम है। और मैं उन गरीब लोगों के पैसे से हिंदुस्तान की रोड और टनल बनाऊंगा और उनको धनवान बनाने का काम करूंगा। You see, I have got 15, there are asset monetization happening, 15 major ongoing projects there, 9 major initiatives, 100 lane, 100 hours stretch made. Now, this is a lot of statistics. Do you think Indian politics should shift to a point where this decides what government should rule the country? देखिए, we are the fastest growing economy in the world. The target of our prime minister to make Indian economy of $5 trillion. The third highest. What is the target in politics? What is the ambition? What is the mission? No. Politics is an instrument of socio-economic reform. Eradication of poverty is our mission. For that reason, we need to have good industry, agriculture, and good export, by which we will receive capital investment, industry, trade, business, and by which create employment potential. And creating employment potential, we will eradicate the poverty. क्या इस देश से गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए? अगर गरीबी दूर कब होगी? जब इंडस्ट्री आएगी। अगर रोड अच्छे नहीं बनेंगे, पावर नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, ट्रेड बिजनेस नहीं बढ़ेगा, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि लोगों ने क्वालिटेटिव पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये प्रश्न नहीं कि कौन कांग्रेस और बीजेपी का है, ये प्रश्न नहीं कौन से जात पंथ धर्म भाषा का है। देखो, मुसलमान को जिस भाव में पेट्रोल डीजल और गैस का सिलेंडर मिलता है, उसी में हिंदू को भी मिलता है। वी नीड ए गुड लीडरशिप, कैपेबल लीडरशिप, करप्शन फ्री सिस्टम, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड रिजल्ट टेकन प्रोसेस। तो ये सब बातें अगर हमको करनी होगी तो हमें देश में एक क्वालिटेटिव चेंज करना हो। My last question. आप अच्छा सड़क बना रहे हैं, आप बायोफ्यूल्स ला रहे हैं, you're reducing costs, सरकार टॉयलेट्स बना रही, नलके लगा रही है, मकान बना रही है, मगर there is a new counter, caste census हो रहा है. Are you afraid? A lot of BJP people are saying that it can be problematic. देखिए, कास्ट के कारण हम पूरे को समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको कंसेशन देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। पर व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और विवेकानंद की जात नहीं पूछते, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जात नहीं पूछते, शिवाजी महाराज की जात नहीं पूछते, भगवान गौतम बुद्ध की जात नहीं पूछते, भगवान महावीर की जात नहीं पूछते। जो बड़प्पन होता है, जो अच्छाई होती है, इसका संबंध जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं होता। हम समाज को आगे ले जाना चाहते कि पीछे ले जाए, वही झगड़े करें, वही चार लोगों जाति जाति में लट्ठे लेकर लोग चले। और मुझे एक बात बताओ, नौकरियां तो उतनी है, बढ़ेंगी नहीं। देखो, उसकी नौकरियां कब बढ़ेगी? जब लिबरल इकोनॉमी में इंडस्ट्री बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में इरिगेशन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा, तब ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेगी। हम ये फिर से गाड़ी जो आगे जा रही है उसको पीछे जाकर फिर जाति के आधार पर झगड़े करते हुए, जैसे वो मंडल आयोग को लेकर, देखो अब देयर इज ए कॉम्पिटिशन, हु इज बैकवर्ड, एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड। हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या देश के हित में है क्या? मैं मानता हूँ जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको सहूलतें देनी चाहिए, पर अब हम सबको प्रोग्रेस की तरफ जाना है। देखो, ये राजनीति में कौन सी चीज़ फायदे की है? मैं देश के हित में काम करूँगा, गरीब के हित में काम करूँगा, समाज के हित में काम करूँगा। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कहा था कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा, ना बैनर लगाऊंगा, ना चाय पिलाऊंगा, ना कुछ नहीं करूँगा। मैं आऊँगा, आपके पैर छूँगा, आपका आशीर्वाद लूँगा, मेरा काम का रिपोर्ट कार्ड दे दूँगा। आपको उचित लगे तो मुझे वोट दो, नहीं देना। मैं नागपुर इज ए डिफिकल्ट सीट, कांग्रेस ही जीतती थी, अब वहाँ से मैं लड़ता हूँ 3.5 लाख वोट। अभी बड़ा विश्वास है कि और ज़्यादा वोटर से आऊँगा। वी नीड टू चेंज द पॉलिटिक्स, वी नीड टू चेंज द माइंड सेटअप ऑफ द पीपल, वी हैव टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग एंड मीडिया। चारों को मजबूत करके वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा देश वही है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके देश को आगे ले जाना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए जो गुणात्मक है। ये जो चिल्लरवाड़ा है, ये सब करके हम देश और समाज का नुकसान करेंगे, नहीं करना चाहिए। Mr. Nitin Gadkari, you have been in Delhi now for 14 odd years, and next year there will be elections. We wish you luck that you may be there for the next 5 years also, and may you remain as bindas and bebak a politician as you always have been.
Thank you very very much. much for joining us. Namaskar, sir. Thank you very much, sir. Thank you.